हाय एवरीवन। वेलकम टू द डिजिटल एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? वो बहुत बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आई होप यार सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी। एंड आज का जो सेशन है यार, ये बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो आई मीन पहले से जो है बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ना बेटा इजी हो जाएगा। ठीक है। विल कम बैक हियर एंड आई गाइड यू टुवर्ड्स इट। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है प्रीवियसली क्या क्या कंप्लीट किया था इस क्रिएटिंग एन एज्योर एआई सर्च सॉल्यूशन, ये हमने बेटा कंप्लीट कर लिया था। देन वी स्टार्टेड आवर क्रिएटिंग अ कस्टम स्किल फॉर एज्योर एआई सर्च, ये हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा। हमने स्क्रॉल डाउन किया था, नॉलेज स्टोर विद एज्योर एआई सर्च, ये कंप्लीट कर लिया था। एंड फाइनली कंप्लीट किया था implementing advanced search features in Azure AI Search। ये क्लासेस थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई हैं, आई नो। थोड़ा सा चलो क्लासेस को बूस्ट अप करने का ट्राई करते हैं एंड नए लेक्चर्स को फास्ट फास्ट रिलीज करते हैं। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, सर्चिंग डेटा आउटसाइड एज्योर प्लेटफॉर्म इन एज्योर एज सर्च यूजिंग एज्योर डेटा फैक्ट्री, इसको हम खत्म करने वाले हैं। एंड इसके बाद यार बस एंड करेंगे सेशन को। ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा यूट्यूब पे लाइव होने वाला है, तो आगे के जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको यूट्यूब पे कवर किया जाएगा, तो दैट वोंट बी डेली, हम शेड्यूल कर देंगे। या तो हो सकता है कल या परसों में आपका वो सेशन जो है लेके कंप्लीट करूंगा इस पास 3 को। दे और भी अमेजिंग अमेजिंग सेशंस मैंने प्लान करके रखे हैं, but due to the ongoing regular of the course, we're unable to release it. So once that ends, I will be releasing it. Okay. चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और आज का जो सेशन है यार, सबसे छोटा से छोटा सेशन होने वाला है। तो ये तो आप यार मान के चल लो कि 40 मिनट से ऊपर का सेशन नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन ओपन करते हैं एंड शुरुआत करते हैं सेशन का। सबसे पहले यार आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए इंट्रोडक्शन का, क्योंकि यार एट द एंड अगर आपने नहीं लिया होगा ना, तो यहाँ से आपको यार प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन का क्या है, आप पूरा कंटेक्स्ट जो भी चीजें समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, 100 प्रॉपर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डायरेक्ट नोट्स का लिंक रहता है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। जैसे कि अगर यार प्रीवियस सेशन पे आऊँ, तो जो मैंने 4 दिन पहले ये जो रिलीज किया था, उस सेशन को अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं, तो वो वैसा ही सेशन था, क्योंकि बहुत बड़ा लेना था मुझे, तो मैंने वैसे ही सेशन को रिलीज किया था, जैसे कहीं ना कहीं जैसे लाइव सेशन हमने लिए। बट आज का जो है प्रॉपर रिकॉर्डेड सेशन जैसे होगा, आज का लाइव सेशन जैसे नहीं होगा। अगला वाला लाइव क्लास ही है, तो फिर वैसा ही होगा जैसे ये वाला सेशन। ओके। बट उसमें जब हम जैसे टाइमर स्टार्ट करेंगे, तो ट्यून आएगी, इसमें ट्यून नहीं आए। ठीक है। अब थोड़ा सा यार डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, आपको यहाँ पे देखो लिंक टू नोट्स मिलेगा विद सर्टिफिकेट। इस पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, डायरेक्ट वो लिंक पे आपको रिडायरेक्ट करेगा जहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। तो दोनों नोट्स आप वीडियो से मत बनाइए, वीडियो को आप एक बार देख लीजिए एंड नोट्स देन खुद से आप जो है वो नोट्स को बनाए। ओके। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट एवरी टाइम। ओके। एंड अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, तो यार यहाँ पे प्लेलिस्ट नॉर्मली फीचर हो जाती है, बट यहाँ पे ना प्लेलिस्ट जैसे फीचर नहीं हो रही है। आप क्या करो, चैनल पे चले जाओ। चैनल पे चले जाओ या वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी आप AI 109 के अंदर से प्लेलिस्ट उठा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट चैनल से निकालना, आपको वेबसाइट से नहीं जाना है, तो मैं आपको चैनल से निकालने में तक दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट पे जाओ यार,
एंड काफी सारी प्लेलिस्ट आएंगी। ये हमारे मेन प्लेलिस्ट है AI 1009 वाली, ठीक है। ओके। बेटा प्लेलिस्ट जो है ऐसे पिंग नहीं होती, वो ऐसे वो नहीं किया जा सकता कि ऐड टू टॉप, ठीक है। ओके। तो already this has 43 videos, 43 lectures हमारे released है, some live, some recorded, है ना। एट द एंड यार आप देखो तो जो आखिरी लाइव सेशन आया था वो 11 डेज अगो आया था। इसके बाद कोई लाइव सेशन हमारा नहीं हुआ था। इसके बाद से आप देख रहे हो तो जो भी सेशन सारे वो रिकॉर्डेड हो जा रहे हैं। एंड रिकॉर्डेड में क्या होता है, एक स्लो पेस हो जाता है, क्योंकि हमें जो है सेशन को रिकॉर्ड करना है, फिर सेशन को एडिट करना है, देन अपलोड करना है। एंड लाइव में क्या हो जाता है कि एक बार में सब कुछ रहता है, डायरेक्ट स्टार्ट करके डायरेक्ट एंड करना होता है एंड सीधा बताना होता है, ठीक है। This is the 44th lecture, 45th lecture. That will be the last lecture of this playlist. That will be coming live on YouTube. Okay. तो वहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है। इसलिए शुरुआत करते हैं। एंड आई होप सभी ने यार यहाँ पे इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लेके रखा, ठीक है। शुरुआत करें। चलिए ये शुरुआत करते हैं। इंडेक्सिंग द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूजिंग एज्योर डेटा फैक्ट्री। हमने कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स बना के रखा, वहां से हमें डेटा को इंडेक्स करना है। दैट इज जो आप कीबोर्ड में कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हो ना, सम सॉर्ट ऑफ दैट, लेकिन एज्योर में, इनफैक्ट फाउंड्री में या एज्योर में आपको एक कंट्रोल सी कंट्रोल भी वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये काम कोड से करना पड़ता है, नॉट कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। तो आप यार कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप है देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ADF पाइपलाइन बनाएंगे। किसके लिए पाइपलाइन बनाएंगे, डेटा को पुश करने के लिए इनटू सर्च इंडेक्स। ओके। जैसे कि डेटा सर्चेबल है, ठीक है। यूट्यूब भी ऐसी एल्गोरिथम्स पे काम करता है। जितना जितना आपका लेक्चर जो है जितना स्मूथ होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, जितना आपका इंटरेस्ट बेस ज्यादा होगा आपके लेक्चर्स को, उतना ही यूट्यूब जो है वो पुश करता जाएगा। नहीं तो नीचे जो है वो फॉल डाउन हो जाते हैं ना, आपको सर्च करना पड़ता है। दैट हैपेंस। ओके। तो ADF पाइपलाइन कैसे बनाना है, देयर आर सिंपल 6 स्टेप्स ADF पाइपलाइन बनाने के। First step is creating an Azure AI search index with all the fields you want to store data in. Next step is copy data step, then connect with your data resides, then connect to search index, then source data to search index, then run the pipeline. Okay, these are the simple steps जिस पे आप यार सर्च इंडेक्स में अपने डेटा को लेके आते हो। एंड इनफैक्ट ये डेटा जो है, यहाँ पे डेटा जो है, ये हम यार एक प्रोसेस्ड डेटा की बात कर रहे हैं। प्रोसेस्ड डेटा या प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। दिस इज नॉट अ रॉ डेटा, ठीक है। ओके। प्रोसेस्ड information, not a raw data with random facts and figures। रैंडम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम रॉ डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट्स द नोट आई एडेड। ओके, तो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट देन आई प्रोसीड फर्दर। अब इसी काम को करने के लिए you have the JSON format. So let's review our JSON format and see how
this task is being processed. Okay, let's start. So this is the JSON format, copy and paste this code into the code shell. Already I told you, yeah, ये सिंपल कॉपी एंड पेस्ट नहीं होता है. आपको जेसन फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप्स भी फॉलो करना पड़ेंगे. अल्टिल until now, जो आपने डिस्कस इन सो फार पार्ट 3 एंड पार्ट 1 एंड 2 में, हम लोगों को क्या करना होता था इज either you're following the steps or you're following the code. But right now, अब से क्या होगा? You're following both, even the steps, even the code. Because code without the steps is nothing. Okay? So that's the scenario here. Okay? To create a search index, यहाँ पे शो किया गया है इनसाइड द स्क्रीनशॉट कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो. इसको आप प्रॉपरली व्यू करना. ओके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फुल व्यू आई बिलीव नहीं हो पाएगा. हो गया, ये है फुल. ओके, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फुल व्यू एंड हाउ वी डन हियर द स्क्रीनशॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Azure pipeline using ADF copy data tool. एंड उसके लिए भी स्क्रीनशॉट ऐड किए गए हैं. I'll just provide the screenshots. Right now, you can uh, take a screenshot too, or you can just refer the link given in the description to get these all these codes and screenshots. Okay. Now, how to do this exactly? How to create a pipeline using ADF copy data tool. Simple steps we have. Select the ingest, then select next, select ingest. This is the ingest. Then selecting next. Then you scroll down. Create source linked with HTTP service using the following steps. Just need to follow the steps. There is nothing explanation in this. And also do refer the screenshots added here that are very helpful while you just follow these steps which are shown here in the slide. So there is nothing as such like explaining it mostly. Okay. Let's scroll down to after the steps if there is something else. Some limitations of Azure AI search data types. What could be the limitations? Limitations are simple. The string. In string, the Azure AI data type won't work. Then INT32, it won't work. INT64, it won't work. Double, Boolean, and data time offset. These are all the limitations. Okay. Kindly take a screenshot. Okay. And do remember this is the thing to be remembered. Okay. Let's proceed further. Now we have the next unit in our hand, which will be our last unit. Then we will be completing this course. Okay. Then the next course will be coming live on YouTube. Okay. Index and any data using Azure AI Search Push API. So whenever comes the push API, you already know what you're using is the REST API, because already push API here refers to the REST API, because here the only API, the direct API we're using is the REST API. We're using is
REST API. Okay. Now, proper usage of REST API is involved from the coding format. So, how to use a REST API on a coding format? There is a video on this, proper video on this. If you like it, do comment. I'll bring it soon. Okay. Now, how you will use this REST API using the .NET Core code and optimizing and adding large amount of data through the API. Let's see that. Let's see that. For that supported REST API operations, there are multiple features and multiple operations that support that feature. Okay. For example, when we wanted to do indexing, when we wanted to do indexing, we just we just saw for the indexing. When we wanted to do indexing, what operations we use? We use create, delete, update, and configure. For document, what we use get, add, update, and delete. For indexer, we use this. For skill set, we use this. For synonym map, we use this. Okay. Kindly take a screenshot. Then okay, let's proceed. Now, how to call the REST API? The REST API is initially not available in Azure. You need to call this REST API. Now, to call the REST API, again, you have to follow the steps. There is no ideal code like that. Okay. After you follow the steps, you will be getting the REST API. Okay. And the screenshot given here. Nothing much to explain. Then adding a data to index. For that, you can refer this format. Okay. Using this format, you can refer this format for adding the data to an index. Okay. Just a minute. Now let's proceed further. For this, we have the JSON format too. If you want to use the JSON format, then we proceed next. We have the action and the description for the JSON format code we just stated. We use the 200 return status code using the REST API. Then again, we have the JSON code one more time. Then using the .NET code to index data using PowerShell. Steps are given. Just need to copy and paste the steps. To work your optimal batch size, you need the C hashtag programming language. Now the code is directly given. Even its output is given. When you run this code, this will happen. Then implement an exponential backoff retry strategy. For that, the code is given. After the code, we have its idle output, which will be shown. Not here, it's not given here. Using the thread to improve performance. For that, again, the C hashtag code is given. And you can convert the C hashtags code into your own preferable language codes. For example, converting into the Python or the Java. It's an alternative that
Walk 2. Okay. So here we have completed our learning. Now there's a practice exercise. You can practice at your own pace if required and if you are interested. Next is the summary, which is shown here. So kindly take a screenshot of the summary. This is what we learned. This is what we learned. One second. This is that summary. Kindly take a screenshot of the summary. Then we will go to the module assessment and we will end this particular lecture. Kindly take a screenshot. This lecture will be added on our website directly. So kindly take a screenshot. Screenshot done. Okay. Now let's go for the module assessment. Okay. Let's go for the module assessment. Now this will be the last part before we complete our lecture. So what do you think? You can tell your answers and I'll verify it. What do you think for the question number first? What option do you think is correct? Let's ask ChatGPT what it thinks. We'll simply go to the ChatGPT. I can provide you the correct answer key too. Okay. So I'll first check the sign in. Yeah, sign in is there. I'll control C and control V the question. So the correct answer is you have to define the index in the Azure portal. Okay. You have to define the index in the Azure portal. This is the correct answer. Kindly take a screenshot, then we will move to the next. Can we move to the next? Okay. Next, we have here two questions. And these are the last two questions which we'll be answering to complete our module assessment. Okay. Again, let's ask ChatGPT what it thinks about the answer. For the second question, the answer it says it's index. For the third question, it says 207 and 503. So here the answer is index. Here the answer is 207 and 503. Kindly take a screenshot before I move forward and submit my answers. Kindly take a screenshot, please. Screenshot taken. Can we proceed further? Okay. Let's proceed further and let's submit our answers. On submitting, what we find is third is correct, the second is correct, but the first one is incorrect. The first one is incorrect. So let's try a random because I think for the first question there could be multiple possible answers. So let's try a random guess. Okay. Now I've tried the random guess. Now let's check. Okay. For the question number one, it says, what is the limitation of Azure Search Link Service as a sync in copy data task? The JSON can't complex data types like arrays. This is the limitation. Okay. And remember, here everywhere is using
Here we are using everywhere the word the word JSON format. So the option won't contain document. The option won't contain indexing the Azure portal first. This is not a limitation. This is advantage because this is advantage because indexing is clear that we find we find everything easily and in order. This is that disadvantage we were looking for. Okay, so I hope this is clear. Let's just erase my drawing. Now let's gain the certification and finalize this module, this learning. Okay, we have gained the certification. Now we will do is sharing our achievement as we do it on end of the every lecture. We go to the LinkedIn, we wait for the post to arrive and the preview to be loaded. Then we just scroll down and we select post. And now that post is created finally. Okay. Now, okay, just a minute. Yeah. See, recently I took an event on LinkedIn. You can also see that. And here is that event. I'll provide you even the recording if you need. It's also available on YouTube, this lecture. Let's view the analytics here. Now we'll be back soon with another lecture. Thank you. Thank you for joining. Again at the end, please like this video, share it to friends, and do subscribe to my channel, Digitech Education. Thanks a lot for watching this lecture. Do share it to friends and do like this video and do subscribe to my channel, Digitech Education. Thanks a lot for watching this session. Okay. Thank you, everyone. Okay. So, signing off, Mr. Sarthak Gandhi from Digitech Education. Please like this video, share it with your friends, and do subscribe to my channel, Digitech Education.